the next topic is a function of a square matrix. Last topic, function of a square matrix. Now, what is the function of a square matrix? There are two types of function of a square matrix. One by one, we have to learn. The first formula is f of a is equal to m into f of d into m inverse. So f of a is equal to m into f of d into inverse. सर आपका वॉइस लो है सर. So f of a is equal to m into f of d into m inverse. This is function of square matrix. So we have to solve the problems on the basis of this concept, and we have to tackle the numerical. So one by one, find first question. Find e raised to a and 4 raised to a if a is equal to if a is equal to 3 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 3 by 2. So this is our question. Just wait, huh? I'm taking the lecture in 5 minutes. There is a Women's Day celebration in college, so I will join 5 minutes. So don't left.
Now see what we have to apply here. That is, we have to calculate find e raised to a and 4 raised to a if a is equal to. Now we have to find the characteristic equation. So solution I'm taking here. So the solution of this part, the characteristic equation for 2 cross 2 matrix is given. So I'm first of all writing that is a given. A is equal to 3 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 3 by 2. Now the characteristic for this matrix lambda square minus s1 lambda plus determinant of a to 0. Previous lecture clearly explained about this concept. So please remember these things. When 3 cross 3 matrix, you should remember or you should aware about that is lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of a is equal to 0. But for 2 cross 2, we have to utilize this part. S1 is what we have to add the diagonal elements. So S1 is equal to 3 by 2 plus 3 by 2. So this will becomes 6 by 2. So 6 by 2 means 3. Now determinant of a we have to calculate. So 9 by 4 minus 1 by 4. So 8 by 4 which is equal to 2. So we have to substitute here. So we'll getting lambda square minus 3 lambda plus 2 is equal to 0. So what we will getting the lambda equal to? Anyone calculate from the टू calci? कोमा वन अगर calci से नहीं आता तो I can take the value directly. You can the multiplication must be 2 and the addition will becomes minus 3. So it will becomes lambda equal to 1 and 2. So this is a lambda equal to 1 and 2. Now see the next part. What we have to do, we have to apply the same concept here. A minus lambda I into x is equal to 0. So A minus lambda I, we have the matrix A is equal to 3 by 2. So we have to apply the same concept here. 3 by 2 lambda 1 by 2 1 by 2 3 by 2 minus lambda. There are two unknowns, so we have to take x1 x2 equal to 0 0. This is my equation number 1. We have to put the value of lambda 1 by 1 here. So while putting lambda is equal to 1 here, what we will get? In equation, so you will getting 3 by 2 minus 1 1 by 2 1 by 2 1 by 2 and 1 by 2 x1 x2 0 0. ये चीज आपने किया है 3 क्रॉस 3 में, कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए.
So we have to take any one equation, कोई भी एक equation you can take, that is half into x1 plus half into therefore we can shift this part, so half x1 is equal to minus half x2. Therefore this part will becomes what you will getting, you will getting clear, half of get cancel, so x1 upon 1 and x2 upon minus 1. So first eigenvectors you will getting x1 is equal to 1 minus 1. Similarly we have to put lambda in equation number 2. So lambda equal to 2 in equation number 1. So 3 by 2 minus 2, which is equal to what? It is minus 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 minus 1 by 2. x1, x2 equal to 0, 0. Now you can observe this two equation again same. If we multiply by minus here, this part will become plus and this will become minus. अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वेशन फर्स्ट जैसा हो जाएगा. तो वी कैन टेक एनी वन इक्वेशन. So minus 1 by 2 into plus 1 by 2 into x2 equal to 0. Therefore you can see that minus 1 by 2 x1 is equal to minus 1 by 2 x2. So half of the cancel here and you will getting x1 upon 1 is equal to x2 upon 1. Therefore capital X2 is equal to second eigenvector, you will getting 1 1 as it is. So ये हैं जो अब तक हम लोग करते आए हैं, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स में लैम्बडा कैलकुलेट करना और x1 x2 कैलकुलेट करना. Now moving ahead with the next part. As it is, f of a is equal to m into f of d m inverse. Now m means or m inverse we have to get. We should remember these things. M matrix, if you remember in our last lecture I told about, that is known as a transforming matrix. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ m is equal to m matrix किसको कहते थे हम लोग, that is equal to ये जो वैल्यू आपका आता है, फर्स्ट आया था आपका 1 minus 1, second x2 है 1 1. This is my m we have to place. Second, what is a D matrix? That is a diagonal matrix. Diagonal elements आप देखोगे तो 1 0 0 and 2. 1 2 कहाँ से आया हमारा? If you observe, that is lambda is equal to, we have 1 and 2. Lambda is equal to 1 and 2. So this is known as a diagonal matrix. Now m inverse किस तरह calculate करेंगे? So always remember that m inverse for calculation, m inverse is equal to adjoint of m divided by determinant of m. ये फॉर्मूला है. अभी adjoint of m का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो adjoint of, suppose I'm just giving one thing, let एक मैट्रिक्स है जिसमें a b c d है. यस, कॉलेज में आप लोग पढ़ते हो. अगर उसका adjoint लिखना है तो adjoint of a which is equal to,
what we have to do here, that is adjoint of this part. We have to multiply a और d को, तो यहाँ पे d आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाता है, और ये दोनों को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस b और ये पार्ट आपका माइनस c हो जाता है. सो एडजॉइंट ऑफ a किस तरह निकालते हैं, यू शुड रिमेंबर. सो आई एम जस्ट टेकिंग दैट इज a m inverse. So therefore m inverse is equal to, I'm writing directly here, m inverse is equal to adjoint of m. अगर आप निकालोगे तो you will getting the matrix is, इधर जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो you will get -1 and this you will getting +1. So please remember that adjoint of m and divided by determinant of m. तो determinant of m निकालना कोई बहुत बड़ा वर्क नहीं है. 1 into 1 1 हो जाता है, and माइनस बीच में माइनस माइनस प्लस, तो you will getting 2. So this is your m inverse. Now we have to substitute here. Now what is our f of a and what is f of d? So I'm just explaining here. F of a is equal to 1 by 1. The first one is e raised to a, because the question was clearly given, find what we have to find, e raised to a and 4 raised to a. So 1 by 1 we have to take e raised to a. So what will be my f of d? f of d मेरा क्या होगा, देखो अच्छी तरह से. f of d means we have to take the diagonal elements. अभी diagonal elements में एक e raised to आपको रखना है at which place, that is diagonally place. So we have to place this part as it is here. Just a second. Okay, now we can see here, that is f of d. So जो e है उसको diagonally place करोगे आप. diagonally place करोगे मतलब ये d मैट्रिक्स में, तो you will getting e raised to 1 0, and second we have to place 0 as it is, and e square. Always remember that सिर्फ डायगोनली प्लेस करोगे, डायगोनल पे एक्सपोनेंशियल रखोगे, देन यू विल गेट एफ ऑफ डी. इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई रेस टू ए, देन एफ ऑफ डी मींस व्हाट, वी हैव टू प्लेस इट डायगोनली. So now we have to put all these terms here. So we'll getting what, f of a is equal to e raised to a, e raised to a is equal to f of m matrix. So we have to put here 1 1 minus 1 and 1. F of d means this matrix we have to put e 0 0 and e square into all our multiplication term m inverse we have to put. So m inverse means this matrix. So 1 by 2 को मैं आगे लिख देता हूँ, 1 by 2 into this 1 minus 1 1 1. Now we have to simplify the terms or multiply these terms. So multiplication, you should remember that row into column. The concept is clearly, that is the e raised to a is equal to 1 by 2. I'm taking outside and I'm multiplying this part 1 by 1. तो पहले मैं ये और इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और फिर इसको एज इट इज रख रहा हूँ यहाँ पे. So 1 1 minus 1 and 1 into, now you can see that row into column, e into 1. I'm just applying here e into 1.
So E into row into column. So E into 1 E is by default E into 1 E. Now 0 into 1. So we have to put as it is, means we have to write plus 0 into 1, तो 0 हो जाएगा आपका part as it is. Next we have to move this part here, row into column, first column. Now first row, second column, so E into minus 1, that is minus E, then 0 into 1, that is plus 0. Similarly second row into first column, so 0 into 1 0, plus E square into 1, that is you will getting E square. The next 0 into minus 1, that is 0, plus E square into 1, that is E square. So e raised to a, which is equal to 1 by 2, 1 1 minus 1 1. This particle becomes e minus e square, e square. देखो रो इंटू कॉलम करते हैं हम लोग, रो इंटू कॉलम, तो ई इंटू वन ई प्लस जीरो इंटू वन जीरो, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करोगे तो ई इंटू माइनस वन माइनस ई प्लस जीरो इंटू वन जीरो. Similarly second row first column. Similarly here we have to apply e raised to a 1 by 2. First in row into first column, so 1 into e plus e square. Now first row second column, so minus e plus e square. Now second row first column, minus e plus e square, minus minus plus e square. ये हमको result मिलता है. So hope you are everyone is clear about that is how to apply the multiplication. Similarly the calculation is also we have to perform for 4 raised to a. तो जहाँ पे भी e है वहाँ पे 4 सिर्फ आप रखोगे substituting, तो 4 plus 4 square, then minus 4 plus 4 square, then minus 4 plus 4 square, 4 plus 4 square. So 4 raised to a is equal to 16 plus 4, that is 20, 16 minus 4, that is 12. Sorry, 1 by 2 we have to kept as it is, 1 by 2, then again 12, then 20. So we can divide by a whole term with 2, and we'll getting 4 raised to a is equal to 10, 6, 6, 10, and this is final result. So just see and observe that what we perform. हेलो सर. वो बोलो आप. हाँ सर. डी और एफ ऑफ डी कैसे आया, मेरे को वो नहीं समझा. What is your doubt? हेलो सर, आवाज आ रहा है? हेलो.
हेलो सर, आवाज आ रहा है अभी? नहीं आ रहा है बेटा, अभी बोलो। हाँ। डी और एफ ऑफ टी कैसे बोलो आया? बोलो, आप अभी बोलो। हाँ, डी और एफ ऑफ टी कैसे आया सर? भाई आ रहा है, साउंड आ रहा है। सर आपको आ रहा है? डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किस तरह लिखते थे? बोला था जो आइगन वैल्यूज आते हैं वो डायगोनली प्लेस होते हैं, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है डायगोनल मैट्रिक्स किस तरह है? डायगोनल मींस वी हैव टू पुट our eigenvalues in a diagonally place. Lambda equal to 1 2 we have to place it diagonally. M matrix means transforming matrix, we have to put eigenvectors at the place of c1 and c2. So we'll getting f of d मतलब जो भी आपका फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या क्वेश्चन में दिया है, एक्सपोनेंशियल एंड 4 रेज टू है, तो एक्सपोनेंशियल के जगह पे आप क्या एक्सपोनेंशियल आप प्लेस करोगे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके। जीरो तो एलिमेंट्स है नहीं आपके, एलिमेंट्स आपके कौन से हैं 1 and 2, तो उसको डायगोनली प्लेस करोगे, दैट विल बिकम्स एफ ऑफ डी बिकॉज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई रेज टू ए। So f of d is equal to what? F of d is equal to, clearly that is we have to place that function at diagonally place. So an exponential at 2, so e raised to 2. ठीक है सर, समझा। थैंक यू सर। सर बोलो बोलो। सर ये हाफ कैसा आया सर? खाली ये हाफ पे मैं समझ में नहीं आया, ये हाफ क्यों लिया आपने इधर? फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या फॉर्मूला है? डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या आएगा? व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ m? 2 सर। डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या आएगा? आई एम आस्किंग। 1 सर। 1 कैसे आएगा बेटा? 2 आएगा ना। 1 इंटू 1 1 एंड माइनस 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 1 प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2। हाँ, तो दैट डिटर्मिनेंट m इज इक्वल टू 2, सो वी हैव टू प्लेस हियर। यहाँ पे आपके लिए लिखा है m इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, ये पार्ट है आपका। अब ये चीज और m, तो क्या आएगा आपको? ओके सर। सर सर ई के ऊपर 2 कैसे आया सर? क्या कैसे है? ई के ऊपर जो हमने पावर में 2 लिखा है ना, वहां पे आपका वॉइस ब्रेक हो गया था, तो समझे नहीं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपके? 1 and 2। e रेस टू 1 एंड e रेस टू 2 आएगा, ओके बिकॉज सर। 1 और 2। अगर 1 और 3 रहता तो e रेस टू 3 आता, अगर 3 4 रहता तो e रेस टू 3 और e रेस टू 4 आता। ओके सर, थैंक यू सर। सर x1 सब्स्टिट्यूट कैसे हुआ, मुझे वो नहीं समझ आ रहा है। और लैम्डा इक्वेशन 1 या 2 आपने लिया, देखूंगा सर। हाँ सर, x1 अपॉन 1 इक्वल्स टू x2 अपॉन 1, वो कैसे है मुझे वो नहीं समझा सर। इससे पहले आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर समझ में आए आपको? सर थोड़ा डाउट था उसमें। हाँ, क्या था? थोड़ा डाउट, थोड़ा वो प्रैक्टिस करना बाकी है सर। तो पहले वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये कोई नया टर्म तो है नहीं, दिस इज क्लियरली दैट इज जो भी x1 के डिनोमिनेटर x2 के डिनोमिनेटर में होता है वो तुम्हारे आइगन वेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या रहता है? 1 रहेगा ना। इफ देर इज नथिंग देन मीन इट मीन्स व्हाट? अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, a लिखूं, तो इसका मतलब 1 इंटू ए है या नहीं है? हाँ सर। तो उसी तरह x1 इज ये हाफ x1 हाफ माइनस हाफ कैंसल,
तो x1 इसके नीचे 1 है और x2 के नीचे क्या है -1. सो दैट थिंग वी रिटर्न हियर ओनली. बाकी इसमें कुछ अलग चीज नहीं किया है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहला अगर आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नहीं समझ में आएगा तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा. इसलिए आइगन ओके सर. वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की प्रैक्टिस करो. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू सर. ओके, नेक्स्ट एनीवन. सर नोट डाउन करना था, तो जो ई ऑफ ए निकाला है वहां पे जाइए ना सर, लिखना था, नोट डाउन करना हाँ कर लो तो बेटर है. नोट डाउन तो करना चाहिए. लेक्चर्स मैथ्स के लेक्चर्स तो ऑलवेज नोट डाउन करो. इट विल बी हेल्पफुल. क्योंकि आप लिख के जब लिखते हो तो आपको कुछ भी डाउट रहता है तो और अच्छी तरह से आपका क्लियर होगा. अदरवाइज मैथ्स रीड करो या सिर्फ देखोगे तो हेल्पफुल नहीं हो. हो गया इतना लिख के, क्या और लिखना है? सर ई ऑफ हो गया सर. जो मेन फाइंड व्हाट? सर ई ऑफ ए फाइंड किया ना, वहां से बाकी था. Write down. I'm just sharing the attendance link. सर बोलो आगे, बोलो सर के आगे क्या मतलब. सर वो M3 का पेपर का डिस्कस करना था सर. M3 के लेक्चर में अभी नहीं. ओके सर. सर हो गया लिख के. ओके, अगर अटेंडेंस भी फिल करके हो गया तो यू मेल यू नो, बिकॉज थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस है आज लेक्चर्स का. सो यू मेल यू नो अगर अटेंडेंस का भी हो गया तो. ओके सर, थैंक यू सर.